तो आज रो क्लास रे so what we'll do we'll see the real time project real time रे केमती तमे गोटे जावा एप्लिकेशन को बिल्ड करियो ता विषय हमें जानिबा ठीक अछि तो गोटे जावा एप्लिकेशन फर्स्ट जेमती कि मु तुम कहली जे कोनसी तमे ऑटोमेशंस करबा को जाउछो तार मैनुअल एग्जीक्यूशंस मैनुअली एटा केमिति एग्जीक्यूट हबो राइट ता विषय तुमको फर्स्ट जानिबा को पड़िबो राइट आ ता पे कोन कोन सब टूल्स दरकार कमांड्स दरकार राइट तमे मैनुअली जानि साइला परे ही गोटे दिनस तमे कोन ऑटोमेट करि परिबो राइट तो सेमती हमें कोन करबा फर्स्ट सपोज हमें गोटे एप्लिकेशंस एबे गोटे एप्लिकेशंस बिल्ड करबा ओके तो हमें जेमती काली हमें देखितले ठीक है तो फर्स्ट थिंग होची कोन हमें जावा एप्लिकेशंस गोटे नबा तो तार रेपोजिटरी मु तुमको बतै दोछ रेपोजिटरी मु छोटो एप्लिकेशंस गोटे नोची जोटा कि डेवऑप्स वेब ओके एटा गोटे हमरो स्मॉल जावा एप्लिकेशन जोटा कि हम डेमो पई रखा हिची आ ताको बहुत माने 393 GitHub users have forked it okay तामने तांको अकाउंट सहित कनेक्ट करछंती जोटा कि से एटा को यूज करूछंती तांकर पर्टिकुलर डेमो बा प्रैक्टिस पई राइट तो एटी देखि हम 30 टा ब्रांचेस कराइची तो बेसिकली हम एतले गिटहब क्लास रे हम पढितले राइट हमरे देखितले मल्टीपल ब्रांचेस हमें क्रिएट करि परिबा ता सहित जो ब्रांचेस को हमें चाहिबा डिलीट करिया तो can anybody answer this question when should we delete a branch when should we delete a branch in GitHub डिलीट कर देबा कथा आ करि पारिबा एटी केते 30 टा ब्रांच अछि राइट मुझे देखिबे 30 branches are there all branches I don't need all the branches right तो मु चल केते मते गोटे दुईटा बा चारटा branches based on the members working in your team right what they can do they can work on the rest of the branches you can delete it so my question is when should or when a person can delete the branches when a person can delete the branches okay की कोई परिबो कोई सब ब्रांचेस अछि तुम गोटे ब्रांच डिलीट करिया पूर्वरु बा ये करिया पूर्वरु तो मते फर्स्ट कोन कंफर्म करिया पड़ी एना रियल टाइम रे तुम काम करिया पड़ी और कोड ता पुश जो मास्टर को एग्जैक्टली तो जेते बळे हमर गोटे नॉट पुश हेतिबो ता कोन मर्ज हेतिबो राइट जदि हमें पुल रिक्वेस्ट रेज करिकरी ऑलरेडी मर्ज करि दैछे ऑलरेडी सेटा मास्टर रे अवेलेबल अछि बा रिलीज ब्रांच रे अवेलेबल अछि तो सेही गला परे हमर कोन बस एक्स्ट्रा ब्रांचेस जोटा ऑलरेडी मर्ज हेकि अछि सेम कोड विल बी अवेलेबल राइट देन वी डोंट नीड सेपरेट ब्रांचेस तो हमें कोन करबे ताको डिलीट कर पाए राइट तो फाइन एटी सब जो ब्रांचेस हमें करछो सब पर्टिकुलर डेमो ब्रांचेस का जहाँ भी जो डेमो कराइतला से सब ब्रांचेस गुरा अछि राइट तो फाइन से ब्रांचेस थाउ वर्तमान हम ब्रांच किछि डिलीट करिबानी तो ए जो डेवऑप्स वेब अछि एटा एक्चुअली बेसिकली गोटे जावा एप्लीकेशंस तो बेसिकली गोटे जावा एप्लीकेशंस तो ई जावा एप्लीकेशंस को हम बिल्ड करियर अछि ओके तो आज ए डेवऑप्स इंजीनियर राइट तुमको कोन दरकार तुमको कुआला तुम रिक्वायरमेंट तुमको दिया गला रिक्वायरमेंट हला build a Java application and deploy to Tomcat server. Okay. एटा हला हमरो कोन रिक्वायरमेंट एटा तुमको दिया हला आज डेवऑप्स इंजीनियर तमे कोन करिवो गोटे जावा एप्लीकेशन को कोन करिवो बिल्ड करिवो
तो जावा एप्लिकेशन बिल्ड करिया पे हेले तुमको फर्स्ट कोन दरकार है सोर्स कोड दरकार है एप्लिकेशन सोर्स कोड दरकार है सोर्स कोड रेपोर्ट दरकार है जो रेपोजिटरी रे सोर्स कोड थिबो एटा दबो किए तुमको तमे का सहित कथा हबो डेवलपर सहित डेवलपर विल गिव यू द ओके एटा पाई गला परे तापरे कोन हबो बिल्ड करिया पई को बिल्ड टूल दरकार है तुमको व्हिच बिल्ड टूल यू नीड build tool right suppose maven tool going to build तो maven tool तुम यूज करिया भाई तुम की इंफॉर्मेशंस तब again developer will provide you the informations okay so build tool you got the applications developer application team तुमको देबे राइट तो बिल्ड टूल पाई गले तो बिल्ड टूल पाई गला परे तमरो तार तुम कोन करिया अछि कोड स्कैनिंग राइट कोड स्कैनिंग कोड स्कैनिंग राइट कोड स्कैनिंग करेगो जी के दबो एठी कोड स्कैनिंग रे तमे कोन हबो ना को टूल यूज करिवो व्हिच टूल यू आर गोइंग टू यूज द DevOps engineer with collaborations of management team right managers तो DevOps engineer एटा डिसाइड करिवो बा डिस्कशन करिकरी तमर कोन टीम सहित तमे डिसाइड करिवो को टूल तमे कोड स्कैनिंग पे यूज हबो राइट तो बिल्ड टूल पूर्वरु जदि यूनिट टेस्ट करिवार अछि यूनिट टेस्ट फाइन कोन टूल यूज करा हबो यूनिट टेस्ट टूल राइट यूनिट टेस्ट फाइन कोन टूल सपोज जावा एप्लीकेशंस अछि जे यूनिट दरकार तो एटा इंफॉर्मेशन के दबो डेवलपर दबो राइट तो कोड स्कैनिंग फाइन DevOps engineer राइट तापरे टेस्ट एनवायरनमेंट तापरे हमें डिलीवरी करिवा राइट कोड डिलीवरी एटी कोन अछि हमरो डिप्लॉय टू टॉमकैट सर्वर सपोज टेस्टिंग सर्वर को हम टेस्टिंग करियार अछि राइट तो हमको टॉमकैट सर्वर इंफॉर्मेशंस टॉमकैट सर्वर डिटेल्स तो एटा के दो तुमको मैनेजमेंट टू तमे पाइबो राइट तो सर्वर इंफ्रा टीम विल गेट फ्रॉम द इंफ्रा टीम टू कोन पाइबो इंफ्रा टीम टू तमे पाइबो सर्वर ब्लैंक सर्वर with discussion after discussing with this with your manager right तो कोन तमे इंफ्रास्ट्रक्चर टीम टू कोन पाइबो केवल सर्वर पाइलो ताकू टॉमकैट इंस्टॉलेशंस करिवार काम हैला DevOps इंजीनियर तमे कोन करिवो टॉमकैट इंस्टॉलेशंस करी ओके ये सब डिटेल्स हम बते देबी केमती कोन इंस्टॉलेशंस वगैरह तो ये कंप्लीट रिक्वायरमेंट को एतिकी कंप्लीट ऑटोमेशंस करियार अछि तो के करिवो सब तो you have to as a DevOps engineer you have to do all this work तो एठी कोन हला DevOps engineer कोन कला कोलैबोरेशन रोइला एठी राइट कोलैबोरेटिवली से कोन कला काम कला का सहित डेवलपर सहित मैनेजमेंट टीम सहित इंफ्रास्ट्रक्चर टीम सहित राइट एटा हला सब टेस्टिंग सर्वर प्रोडक्शन सहित काम करिया गले देन he has to collaboratively work with operation team ops right सेति पई तो DevOps ना collaborations between development and operations right तो एते सब हमको सेटअप करिया को पड़िबो तो वर्तमान हमको देखिया पड़िबो तो जेनकिंस रे हमें जो काम करिया वर्तमान तो कोन सेटअप करिया हमको दरकार फर्स्ट हबे सोर्स कोड कोन रेपो दरकार राइट ए हिसाब रे हमें जिबा वर्तमान सोर्स कोड रेपो दरकार तो हमें कोन करिया सोर्स कोड रेपो आनिबा कोड आनिबा डेवलपर टू मागिबा तो डेवलपर सोर्स कोड रेपो देला राइट तो ये सोर्स कोड रेपो रे कोन करियो हमें सपोज आइदर तमे मास्टर ब्रांच तुमको देबे किंबा तुमको स्पेसिफिक ब्रांच देबे जोटा कि तमे डेवलपर काम करथु से हिसाब रे तमे ताको टेस्ट करियो ओके तो 1 मिनिट तो मते किछि पाइपलाइन स्क्रिप्ट दरकार नै जेतु हमें कोन फ्रीस्टाइल जॉब क्रिएट करिबा तो मु कोन करछि ना गोटे जस्ट फ्रीस्टाइल देखु जो ब्रांच होतरी के फ्रीस्टाइल थिबो राइट लेट्स डेवलप्स 1.0 इट बी जेनकिंस फाइल अछि तमर दरकार नै जेनकिंस फाइल ता ओके नो वरीज मु कोन करछि ना मास्टर ब्रांच टू ओके
मास्टर ब्रांच गोटे वर्तमान कौन देख एठी मु कौन करछि ना एटा तमरो एप्लीकेशन repository राइट प्रोजेक्ट repository एप्लीकेशन तो तमे कौन करिवो ना जेतेबेले तमे बिल्ड करिया को जाउछ सेतेबेले कौन करिवो you have to as a DevOps engineer you have to create separate repository where you will keep all your DevOps related stuffs okay तो आम जो पाइपलाइन पढ़िबा सेतेबेले नुवा repository गोटे क्रिएट करिबा ता भितर हमें पाइपलाइन स्क्रिप्ट सब जगह रखिबा राइट तो हमें जदी वर्तमान मु देखेबी तुमको दउची तो repository रे हमें जदी वर्तमान देखिबा एठी मु सर्च करिबी तो CI/CD pipelines okay CI/CD pipelines तो CI/CD pipelines रे हमरो कंप्लीट पाइपलाइन्स रोची जो पाइपलाइन्स रे हमें काम करिया म एठी गोटे ब्रांचेस क्रिएट करी करा हिची तो जोडा कि मु तुमको वर्तमान बतै देबी केमिति तमे CI/CD पाइपलाइन ने तम ब्रांच रे तमरो पर्टिकुलर तम ब्रांच रे CI/CD पाइपलाइन ने तमे तमरो कोड लिखिबो थ्रू CI/CD पाइपलाइन ने केमिति तमे एग्जीक्यूट करी वर्तमान एटा कोन प्राइवेट अछि राइट दिस रिपोजिटरी इज करंटली प्राइवेट रिपोजिटरी राइट त हमें कोन करिबा let this private repository हमें कोन करिबा नेक्स्ट जतले पाइपलाइन स्क्रिप्ट पढिए सेतबेले हमें कोन करिबा हमर निजर गोटे repository बनेबा डेमो पई सेतम तुमको बतै देबी ठीक अछि जेहेतु एटा हमर पर्सनल प्रोजेक्ट रिलेटेड काम करछ हम प्राइवेट तक रखी छी लेट्स गो बैक तम कोन काम करिया अछि डेवॉप्स वेब रे तो तमे फर्स्ट मु फ्रीस्टाइल जॉब रे सेति पई हम तुमको बेसी किछि बतौनी सेपरेट repository क्रिएशंस पई डेवॉप्स पई तो सेम repository हमें काम कर दवा वर्तमान ठीक अछि तो मते कोन दरकार ए गुटे कोनसी repository मते बिल्ड करिया अछि तो सपोज मते मास्टर repository की बिल्ड करिया अछि राइट तो मु कोन कली URL first मते दरकार राइट as per the requirement मते कोन सोर्स कोड रेपो दरकार रेपो URL मते मिल गला तो मु कोन करिवे वर्तमान GBF रे न्यू आइटम क्रिएट मते सपोज किछि ऐड करिया अछि मु चाहूची एप्लीकेशंस नाम दे देली ओके जावा ऐप बिल्ड जावा ऐप बिल्ड दे देली जावा ऐप बिल्ड ओके फ्रीस्टाइल ओके फ्रीस्टाइल जॉब मैं लिखि दूची फ्रीस्टाइल जावा ऐप बिल्ड फ्रीस्टाइल तो हमें फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट सिलेक्ट कले ओके क्विकली मैं बता दूची तापर हमें ट्रिगरिंग ऑप्शंस विषय डिस्कशंस करबा बेटर यू हैव टू गिव ए प्रॉपर डिस्क्रिप्शन सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इन योर टीम लाइक व्हाट project you have created right so I'm like this is okay our Java app build and deploy something like that okay तो एठी मते कोन git सिलेक्ट करिया पड़ियो git repository जोडा कॉपी करथली बर्तमान सेटा पेस्ट कर देली git एटा जेतु पब्लिक डी कोन क्रेडेंशियल्स किछि मागिबनी ओके ऑटोमेटिकली नहीं गला एटा पब्लिक repository तो प्राइवेट repository हेतले तुमको क्रेडेंशियल्स देइतांत राइट तो मते पब्लिक repository नहीं गला तो एठी कोन मास्टर ब्रांच अछि मते मास्टर ब्रांच बिल्ड करिया अछि लीव इट तो आसलो ट्रिगर ऑप्शंस हमें नेक्स्ट ईयर बुझे देबी ट्रिगर तापर हमें देखियो केमदी ट्रिगर काम करछि तापर कोन एनवायरनमेंट लीव इट बिल्ड स्टेप ऊपर हम काम करिया ओके तो बिल्ड स्टेप रे कोन करिबा हमें तमे कोन करिया को चाहूछ फर्स्ट जदी तमे किछि यूनिट टेस्ट लिखिबा को चाहूछ राइट तो कोन करिवो एग्जीक्यूट सेल मारिकरी जे यूनिट रो कमांड लिखि परिबो ता छडा हमें कोन करिया वर्तमान सपोज मु डायरेक्टली कोन करछि ए जो स्टेप्स मु तुमको बतैतली डायरेक्टली बिल्ड स्टेप को आसुछि हां एटा जे यूनिट टेस्ट हम जे यूनिट ता हमें पर देखिबा सोर्स कोड सारी गला तापर हम आसिया कोन बिल्ड टूल तो बिल्ड टूल कोन करिया हमें जेतोटा जावा प्रोजेक्ट ता हमर रिक्वायरमेंट हिसाब रे मेवेन ही यूज होछि हमर प्रोजेक्ट ता हमें मेवेन यूज करिबा तो मेवेन ऑलरेडी we have seen how to install maven in our server right तो maven यूज करिया तो maven जेतबे हमें इंस्टॉल करि दैछे जे प्लगइन्स maven इंस्टॉल सरिला परे maven रो गोटे इन्वोक टॉप लेवल maven टार्गेट्स तुमको मिलिबो इन्वोक टॉप लेवल maven जदी तमरो maven तमे प्लगइन इंस्टॉल करिनो then these options will not be there okay invoke तो एठी कोन हला
Maven version ମୁଁ ଏବେ क्वेश्चंस पचारि तुमको राइट ए जो Maven versions ता हम पाइली लोकल Maven राइट एटा मते किए बते एक्सप्लेन करि परबे एटा कोन व्हाट इज दिस लोकल Maven ऑटोमेटिकली सेटा आसुची डिफॉल्ट अछि लोकल Maven अछि एटा कोन कोन रिपोजिटरी हां एटा कोनटा लोकल Maven ता रिपोजिटरी टा ना आउ के कहि परिबो ई टूल टा हमें कोड सेटअप करथिले ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशंस रे राइट हमें सेटअप करथिले कोठी ग्लोबल टूल कन दैट्स सेति पई गाइस मु तुमको कहूची प्रैक्टिस करो नले किछि भी जानि परिबनी तो माने जेनकिंस रे टूल्स रे हमें लास्ट क्लास रे कोन टूल्स रे कोडी यूज करथिले मावेन इंस्टॉलेशंस रे राइट एठी हमें लोकल मावेन यूज करिछे तो एठी हम मावेन होम देइछे एठी हमरो मावेन बाइनरीज अछि जोटी कि मावेन एप्लीकेशन टा मावेन टा हमरो जावा एप्लीकेशन को बिल्ड करिवो तो ये मेवेन एप्लीकेशंस जोडा अछि तार हम ना देइछे उटे लोकल मेवेन तमे जहां भी एबीसीडी जहां ना देइछो सही नाटा एठी रिफ्लेक्ट करूछि हां को कहल ओके सो एटा हला कोन हमर प्लगइन हिसाब रे आसुची तापर हमें मु देखितले भी मेवेन केमति डाउनलोड करिके इंस्टॉल करिवो राइट ओके तापर गोल्स तमे बिल्ड रे कोन गोल करबा को चाहूछ कोन करबा को एक्चुअली चाहूछ राइट तो एबे हमें पढिबा कोन बिल्ड लाइफ साइकिल केमिति गोटे एप्लीकेशंस बिल्ड होजी तार सब लाइफ साइकिल कोन अछि ओके हमें वर्तमान देखिबा बिल्ड लाइफ साइकिल ओके कोन देखिबा बिल्ड बिल्ड लाइफ साइकिल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम जानि छी राइट बिल्ड लाइफ साइकिल देखियो तो बिल्ड लाइफ साइकिल रे कोन कोन अछि तार मु तुमको गोटे लिंक दे दोची से लिंक ता तमे देखिबो भला बे जान पाइबो लेट्स जस्ट सर्च करो मेवेन बिल्ड लाइफ साइकिल ओके तो फर्स्ट अछि इंट्रोडक्शन टू बिल्ड लाइफ साइकिल आउट ऑफ मेवेन अपाची रही तार कंप्लीट बिल्ड लाइफ साइकिल ता देई ए पर्टिकुलर पेज ता तुमको दे दोची जोडा कि तमर कंप्लीट लाइफ साइकिल पर तुमको बे बतई भी दोची ता सहित तमे निज आडू टिके प्रैक्टिस करिवो देखिवो केमती बिल्ड लाइफ साइकिल ता काम करूची राइट तो chat where is chat okay जस्ट क्लिक करिकरी तम माने ब्राउजर एटा को बुकमार्क करिकरी रखि दियो ओके तो इंट्रोडक्शन टू बिल्ड लाइफ साइकिल हम देखिबा वर्तमान मेवेन रो जो बिल्ड लाइफ साइकिल विषय बतैछि तो तार किछि स्पेसिफिक डिटेल्स अछि स्पेसिफिक फेजेस अछि राइट तो स्पेसिफिक फेजेस रे कोन रहउछि ना each of these build life cycle is defined by a different list of build phases तो different phases रहउछि जेमति कि validate compile okay validate compile test package ये सब कोन validate रहिला तो validate कोन करियो ना validate the project is correct and all necessary information is available तो हमें जतबे गोटे जावा एप्लीकेशंस वा जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट हमें लेखुते तो जावा एप्लीकेशंस डेवलपमेंट पछरे ता भीतर बहुत सारा डिपेंडेंसीज कॉन्फ़िगरेशन सेटअप ए डेवलपर हैज टू डू राइट तो डेवलपर जो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करिथिबो जो सेटिंग्स बा डिपेंडेंसीज फाइल सब लेखिथिबो से फाइल्स बा से सब प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशंस करेक्ट अछि ना नाही ताको वैलिडेट करिवो तो तमे हमें कोन जानिबा कोन सेटअप से करितो लेट मी शो यू तो हमें तो गोटे जावा एप्लीकेशन रे काम करछो तुमको सब बेसिक इन्फॉर्मेशंस जानिथिबा दरकार जोटा कि हला देखो मु कोन कहला जावा एप्लीकेशंस मु जदी सोर्स मेन को जीबी तो एठी कंप्लीट जावा कोड्स अछि राइट एप्लीकेशन ना वेब ऐप को जीबी वेब ऐप रे हमरो जेएसपी फाइल HTML फाइल JSP फाइल ये सब अछि राइट ये सब बेला कोन जावा एप्लीकेशंस पर मुझे मेन कुछ भी लेट्स गो टू सोर्स ओके तो ये प्रोजेक्ट रे कोन होची ना हमें देखिया गोटे pom.xml फाइल अछि pom.xml फाइल
ओके सो कौन एटा pom.xml फाइल ए pom.xml फाइल जो गुटे कौन xml फाइल जो थे कि कौन होची ना तमर कंप्लीट प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज जो एप्लिकेशन टा में बनाउछे से एप्लिकेशन रे कौन सब डिपेंडेंसीज कौन टूल्स कंप्लीट टूल्स प्लगइन्स कंप्लीट डिटेल्स एटी रहइबो प्लगइन आउट टूल्स नॉट ओनली डिपेंडेंसीज इट कंटेन्स ऑल द प्लगइन एंड टूल्स दुईटा एटी देखो डिपेंडेंसीज सेट कराइछि पर्टिकुलर कहा ऊपर डिपेंडेंट अछि डिपेंडेंसीज राइट सब जाक डिपेंडेंसीज एठी कोन अछि आमे जे देखिबा एठी पर्टिकुलर जे यूनिट maven जेटी प्लगइन यूज करछि से कोन करछि maven जेटी प्लगइन यूज करछि जे maven jxr प्लगइन यूज करछि राइट तापर एठी देखिबा हमरो एटा हला तार वर्जन ना 1.0 स्नैपशॉट वर्जन ग्रुप आईडी ओके .com.ranjit swai devops web artifact id आ विषय में परे आहुरी दे जानिबा डिटेल्स रे तो ए जो डिटेल्स सब अछि ना ए सब डिटेल्स कोन डेवलपर्स जते बळे गोटे प्रोजेक्ट सेट करिथिबो जते लेखि दियो प्रोजेक्ट ए सब तमरा किछि आदरे काम करिवार नाही मन जानि थाओ कोठी कोन चेंजेस केमिति तमरो ए आर्टिफैक्ट आईडी हिसाब रे तमरा एप्लीकेशंस आसीबो ए स्नैप आईडी हिसाब रे वर्जन आसीबो पैकेजिंग हिसाब रे पैकेज एक्सटेंशन आसीबो तो तमे यदि जानि नथिबो पैकेज एक्सटेंशन आसुची कोडी तो प्रॉब्लम आसीबो राइट तो ग्रुप आईडी कोन जानि नथिबो वर्जन्स कोन यूज होची आर्टिफैक्ट आईडी केमिति आसुची जानि नथिबो देन इट विल बी ए प्रॉब्लम राइट तुम स्ट्रगल करियो पड़िबो तो वर्तमान जेतु हमें जानि देलो जे एक्सएमएल सब जगह pom.xml रे जोटी की जो टूल्स रहउची डिपेंडेंसीज बा टूल्स बा प्लगइन इंफॉर्मेशन सब स्टोर हे रहला pom.xml similarly आउ गोटे अछि settings.xml it also contains the dependencies whatever the application needs जोटा की completely will be given by a developer तो तुमको सेठी किछि इंटरफेयर करिवार नाही बट ओनली थिंग इज तुमको किछि आइडेंटिफाई करियार अछि चेक करियार अछि को टूल यूज होछि को वर्जन यूज होछि तम यदि डेवलपर पाखु न जिबा पई चाहउछो देन यू कैन कम हियर एंड check this pom.xml and you'll get all the information very clear right clear ହେଇଗଲା then ଆମେ କଣ କରିବା application ବିଷୟରେ ପାଇଲା now let's move to the build life cycle तो first कौन करिवो validate करिवो तो जो applications लिखा है तार settings.xml pom.xml और बाकी required binary library सब ठीक से सेटअप करा है ना नहीं complete validate से करिवो validations तो compile code जेतु जावा गोटे कोन compiled language तो object oriented a compiled language right एटी कोन करबे compile the source code of the project जो source code लिखो त compile करी राइट कंपाइल सरला परे कोन जे तापर हमें कंपाइलेशन सरला परे बिल्ड करे हमें फाइनल आर्टिफैक्ट पाइबा टेस्ट हला टेस्ट द कंपाइल्ड सोर्स कोड यूजिंग द सुइटेबल यूनिट टेस्टिंग फ्रेम कंपाइलेशन सरला परे हमें यूनिट टेस्ट करिबा तो यूनिट टेस्ट काई की करा जाय गाइस व्हाट इज यूनिट टेस्ट फर्स्ट कोन हला हमरो वैलिडेट फर्स्ट असला हमर कोन validate validate ପରେ कोन असला compile right validate कोन असला compile पर असला unit test ई unit test ता कोन एक्चुअली की कहबो किसी टेस्टिंग आइडियाज अछि unit test हमें जानि छे जदि टेस्टिंग पिला को पछारिबो टेस्टिंग बैकग्राउंड एंड टेस्टिंग आइडिया जति थिबो टेस्टिंग हमरा एक्चुअली बेसिकली टू टाइप्स रो रहउची गोटेला कोन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आ गोटेला ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आ गोटेला व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आ गोटेला ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ता यूनिट टेस्ट आउची कोन हमर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग रे कोन होची ना जोटी की तमरो कोड जहां भी सब कोड लिखा है इट इज कंप्लीटली विजिबल तो तमे कोन करबो बेस्ड ऑन द कोड तमे टेस्ट करिवो तो एटा करिवो किए डेवलपर विल डू द टेस्ट but basically the unit test being performed by a developer where developer can read the code and test it
Okay, that's why it's called white box test. It's very transparent, can be visible, the codes you can see it. But black box testing re kon hochi na, it will be done by a tester, testing team, right? It will be done by a tester. Testing people will do this. So black box testing re kon asuchi, it is asu amara functional testing, functional testing, regression testing, regression testing, and the बहुत सारा टेस्टिंग ଅଛି ଆମେ right. The black box testing already ଗୋଟେ different team, testing ର ଗୋଟେ different team ଅଛି, but white box testing by unit test is being carried by the developer. Okay, तो यूनिट टेस्ट कराबो, यूनिट टेस्ट कौन हबो, कौन ପାଇଁ यूनिट टेस्ट कराबे, तो चेक कराबो जो कोड पीस ऑफ कोड लिखा आइछि से कोड रे किछि प्रॉब्लम अछि कि नाही, राइट. सेटा कोड फाइंड आउट हे जो कोड रे किछि प्रॉब्लम अछि ना नाही, यूनिट टेस्ट रे हमें धर दबा, धरदेला पर डेवलपर फिक्स कर दो. यूनिट टेस्ट यदि किसी एरर न आसिला देन हमें कौन करबे, नेक्स्ट हैला पैकेज केस बा तुम इंस्टॉल करि परिबो बा डिप्लॉय करि परिबो, वेरीफाई चारटा को सेम आसुची. तो पैकेज कोन, टेक द कंपाइल्ड कोड एंड पैकेज इट शुड डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर्मेट सच एज जार और वर. तापर हमें कोन सपोज पैकेज पैकेज करे, पैकेज कोन हो माने डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर्मेट रे. तो आमे कोन, तो आमे जेतबेले नॉर्मली देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट सेति पय मु कहूची गाइस, मोर बहुत सारा प्राय टाइम रे कुए डेवऑप्स इज नॉट फॉर ए फ्रेशर और डेवऑप्स इज नॉट फॉर ए नॉन टेक्निकल गाइस. काहे कि ना तमे नॉन टेक्निकल गाइस रु आसीचो तो इमीडिएटली फ्रेशर्स तुम किछि जानि नथि. तो नॉन टेक्निकल गाइज जदि भी तुम टेक्निकल एक्सपीरियंस अछि देन इट्स ओके फॉर यू, तुम इजीली धरि पारियो. काहे कि ना ई सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक से ई सब इंफॉर्मेशन तुम जानिबा गोटे पैकेज ता कोन, तो पैकेजिंग केमति करा तुम जानि नथि डेवलप करिवो कोन तुम, राइट. तो ई सब इंफॉर्मेशन यू शुड ए डेवलप्स इंजीनियर शुड नो अबाउट. तो तुम पर किछि आईडिया थिबा दरकार, देन वी कैन डू द ऑटोमेशंस, राइट. तो हमें कौन करियो, पैकेजिंग करियो. कौन पैकेज करियो, जो सोर्स कोड बा डेवलपर लिखिथिबे ताकू कंपाइल पूरा बिल्ड करिवो, कंपाइल करिवो, यूनिट टेस्ट करिवो, बिल्ड करिवो, राइट. पैकेज करिवो, से पैकेज कला पर जो पैकेज सरीबो से पैकेज टा कौन करबा, हमें कौन करबा कस्टमर को बा क्लाइंट को दबा. क्लाइंट को तो हमें डायरेक्ट जो कोड लिखिथिबे डेवलपर एबीसीडी कोड ताकू धरै दबानी ना, ताकू धरै दला एप्लीकेशन हमर चलीबोनी. हम जदी भी आपने हमें देई भी दबा एप्लीकेशन चलीबो, बट कोन होबो ना से कोड टा कोन हेगला क्लाइंट को जना पड़ी गला, कस्टमर को जने सेमान कोन करे तांको हिसाब रे सेमान तांकर कोडिंग करी एप्लीकेशन करिवे. आउ एटा गोटे रिस्की रहउची, कोड कैन बी मॉडिफाइड चेंज्ड बाय समबडी एंड द एप्लीकेशंस विल बी broken, it will be damaged, right. So सेति पय कोन करा जाय ना, we do a packaging. तो पैकेज कलन जो कोड लिखा है से कोड को कंप्रेस कराई बिल्ड कराई करी त गोटे पैकेज बाइनरी फॉर्मेट को कन्वर्ट करा जाय. से बाइनरी फॉर्मेट को गोटिए फाइल जोटा कि इमेज फाइल हमें कहूचे आईएसओ फाइल जेंति इमेज सब कोन कंप्लीट डिटेल्स सेट हे थिबो, इंस्ट्रक्शंस टेम्पलेट सब थिबो, सेंति पैकेज जो हमें जनरेट करबा कंप्लीट सोर्स कोड ता एटा पैकेज हे करी गोटे जेतो हमें जावा ऊपर काम करचे, either it will be dot jar file or dot war file, right. तो dot jar file dot war file जदि हमें jar file कोन एटा जदि किछि डेस्कटॉप एप्लीकेशन रे हमें काम करूचे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाउचे एटाला jar dot jar रे आसीबो. जदि वेब एप्लीकेशन हमें लिख करूचे देन सेटा आसीबो dot war, डॉट war, राइट. पैकेज होला पर ए जो डॉट वार डॉट जार को हमें डिलीवर करिए कोडी टेस्ट एनवायरनमेंट को टेस्ट करिवा, बुझि पालो. देन आस्टी वेरीफाई, रन एनी चेक्स एंड रिजल्ट्स इंटीग्रेशन टेस्ट टू पैकेजिंग, वेरीफाई, इंस्टॉल द पैकेज इनटू द लोकल रिपोजिटरी. तमे लोकल रिपोजिटरी यदि इंस्टॉल करिया पाए चाहछो से कोन करिवो कि टेस्ट होला पर यूनिट होला पर तमे यदि इंस्टॉल यूज करूछो से कोन करिवो डायरेक्टली कोन ताको पैकेज कर दो, पैकेज सारी करी लोकल रिपोजिटरी ताको इंस्टॉल कर दो. Okay, deployments done in the build environment copies the final package to remote repository for sharing with other developers and the projects. The deploy user. Okay, तो हमें वर्तमान हमें गोल सेक्शन रे यूज करिबा कोन आ भितरु वैलिडेट कंपाइल किछि करिवार नै, टेस्ट किछि करिवार नै. हमें जदि लिखि द वेरीफाई आउ
clean package clean माने कौन होची clean it is clean deploy clean कौन करियो ना Maven traverse into very clean okay to clean विषय लेखिनी तो clean कौन करची ना before we execute कौन लिखी if we to be executed the clean phase will be executed fast तो एठी कौन होगा ना clean will completely remove the old packages old setups and everything whatever is done clean completely before you repackage okay repackage करिया पूर्व जहाँ भी डिपेंडेंट जहाँ भी सब थिबो पुराना ओल्ड ताको सब क्लीन करि दो तापरे then it will do the packaging ओके तो आमे कोन करिया वर्तमान एई कमांड भितर maven का ambient कमांड हला maven कमांड जोटा कि थ्रू तमे जदी कोनसी command line interface CLI रे यूज करछो then we can use ambient command okay now आ भितर हमें पैकेजिंग भितर जे कोन गोटे यूज करिया सपोज हम क्लीन पैकेज यूज करिया को जाउची ओके तो मु कोन करबी ना हमर जेनकिंस रे जो गोल अछि से गोल रे मु गोटे लिखि देबी राइट जे कोनसी तमेटी देखो सिलेक्ट करि परियो बडो आसी जे ये करिया पे राइट एडी क्लीन स्पेस पैकेज एटा हमर बीटा को कमांड यूज हो क्लीन पैक क्लीन आउ पैकेज एटा कोन करियो गोल एला हमर क्लीन आउ पैकेज ओके तो एटा यूज हो गेला सो एला एते की बता किछि दरकार नै बिल्ड रे कोन हला मु लोकल मैवेन यूज कली जे तो काहे की लोकल मैवेन यूज करना से कोन करिवो जो टूल सेक्शन रे हमर टूल इंस्टॉल हेछि एके तो प्लगइन इंस्टॉल करी हम ए पर्टिकुलर येटा पाइले राइट यूआई टा पाइले एटा प्लगइन रो जो टूल टा हम इंस्टॉल करिचे बैकएंड रे सर्वर रे सेठी कोन करिवो लोकल मैवेन रे से टूल टा को एग्जीक्यूट करे राइट मु एति कली पोस्ट बिल्ड सेक्शन रे एबे हम पोस्ट बिल्ड देबी एबे खाली कोन बिल्ड देछि आ किछि करूनी हमें डेलीवर आ अलगा फेजेस हमें जत पाइपलाइन ऑटोमेशंस करिवे सेतबळ देखिबा ठीक अछि तो पोस्ट बिल्ड एक्शन तो पोस्ट बिल्ड हम कोन करैउ चाहूछि ना बिल्ड जतबळ सरीबो हम त कोन करैउ चाहूछि सपोज डेलीवर करिया पय चाहूछि बा डिप्लॉय करिया चाहूछि किछि गोटे एनवायरनमेंट को टेस्ट एनवायरनमेंट डिप्लॉय करिया चाहूछि सपोज टेस्ट एनवायरनमेंट को ओके तो मैं कौन करबी पोस्ट बिल्ड एक्शंस एटी बहुत सारा ऑप्शंस अछि ओके आई आर्काइव द आर्टिफैक्ट्स जो आर्टिफैक्ट अछि व्हाट इज आर्टिफैक्ट इट्स द बिल्ड रिजल्ट राइट ऑफ एन एप्लीकेशन गोटे एप्लीकेशन को हमें बिल्ड कला परे जो बाइनरी फाइल आसीबो ताको हमें आर्टिफैक्ट कहू तमे चाहू आर्टिफैक्ट को आर्काइव करिया पय देन वी कैन आर्काइव इट बिल्ड अदर प्रोजेक्ट जदी अलगा किछि प्रोजेक्ट बिल्ड करिया पय चाहू एटा सरला पर तमे करि परिबो तमे जदी किछि डेलीवर करिया पय चाहू देन यू कैन डेलीवर इट जेतो हमर एटी हमें सेटअप करिने कंटेनर्स एटी आसुनी किछि मु तुमको टूल बते देबी को टूल सेटअप कले आसीबो ओके एटी ऑप्शंस आसीबो गोटे आसीबो डिप्लॉय टू कंटेनर सेटा वर्तमान आसुनी जोटा कि पर्टिकुलर टूल हमें इंस्टॉल करिने सेति पय एटी आसुनी ईमेल चाहू पठिया पय तमे ईमेल नोटिफिकेशंस पठे परियो ईमेल सेटअप तुमको बते देबी केमति ईमेल नोटिफिकेशन करिवो ये सब डिटेल्स तमे यूज करि परिबो राइट मु वर्तमान सिंपल यूज करछि आर्काइव द आर्टिफैक्ट्स से कोन करबो ना आर्टिफैक्ट को आर्काइव कर दो सो व्हाई व्हाट इज दिस आर्काइव द आर्टिफैक्ट्स सो आर्काइव द बिल्ड आर्टिफैक्ट्स so they can be downloaded later archived files will be accessible from the Jenkins web page Jenkins web page रे हमें एटा को एक्सेस करि परिबो normally Jenkins keeps artifacts for a build as long as build log itself is kept तो हमें आर्काइव जदी न करिथिया जदी बिल्ड लॉग को हमें डिलीट कर देले वर्कस्पेस डिलीट कर देले कोन होइबो से पर्टिकुलर पैकेज ता डिलीट हे जो तो तमे चाहू ताको रखिबा पई तो तमे आर्काइव आर्टिफैक्ट यूज करि परिबो कोन करि परिबो आर्काइव आर्टिफैक्ट यूज करि परिबो तो मु कोन करबी पोस्ट बिल्ड सेक्शन रे आर्काइव आर्टिफैक्ट्स तो कोन आर्काइव करियर अछि मु कोन कली स्टार प्लस डॉट स्टार डॉट वर फाइल जेतु एटा गोटे कोन हमर ए जो एप्लीकेशन ता मु बिल्ड करूची ए जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ता डेवॉप्स वेब इट इज वन ऑफ द वेब एप्लीकेशंस इट इज वन ऑफ द वेब एप्लीकेशन तो सेति पई मु कोन करले वर एठी देली स्टार स्टार प्लस स्टार डॉट वर त माने गोटे पछु को जाई से
फाइल टा टारगेट्स फोल्डर उठेबो आउ आर्काइव करिवो तो मु एठी जदी देखिबे एठी कोन देइछि देखो स्टार स्टार डॉट आर्काइव आर्टिफैक्ट ता कमांड हैला एटा एई पर्टिकुलर कमांड ता से बैकएंड रे यूज करिवो आर्काइव आर्टिफैक्ट सो आर्काइव आर्टिफैक्ट जोडा आमे जतबळे recommended plugins install करथिले राइट सेतबळे आर्काइव आर्टिफैक्ट्स प्लगइन भी इंस्टॉल अछि तो सेति पे एटा आसुची ऑप्शंस ता राइट जानि पाइलो एटा नाउ सेव इट सेव कर देली तम प्रोजेक्ट वर्तमान रेडी आवर प्रोजेक्ट इज रेडी टू बिल्ड राइट डैशबोर्ड रे प्रोजेक्ट आसी गला जावा आप बिल्ड फ्रीस्टाइल जॉब मु करली ना रूम जानि पले एटा फ्रीस्टाइल जॉब बोली मता भीतर को जिबा पड़िबन राइट तो मु कोन करछि रे वर्तमान बिल्ड करूछि राइट बिल्ड इट तबे कोन कला बिल्ड कला माने बिल्ड कोन होछि फर्स्ट कोन करबो हमको बे रन होछि राइट बिल्ड पे रन होछि फेल हे गला तो कोन पे फेल हला हमें देखिबा तो फर्स्ट कोन करबो से गोटे वर्कस्पेस क्रिएट करबो वर्कस्पेस क्रिएट कर साला पर ता दरे सब कोन करबो से जो प्रोजेक्ट टा को सब डाउनलोड करबो राइट कोठु डाउनलोड करबो क्लोन करिवो कोठु रेपोजिटरी क्लोन करि साइला पर जो मेवेन कमांड अछि से मेवेन कमांड को एग्जीक्यूट करिवो राइट तो हमें देखिए बर्तमान फेल काई हेला जस्ट गो टू द आउटपुट असला तो एटी फेल्योर कोन पाइला Java home environment variable ambient clean package variable is not defined correctly. Perfect. Java home environment variable is not defined correctly. Okay. तो मोर जेहेतु हमें Java applications यूज करूचे तो Java रो home variable टा perfectly यूज हेनी राइट तो एठी पई सेति पे हमें कोन करिया जिवा तो हमें जेतबळे Java home सेटअप कले ना हमें जेतबळे इंस्टॉल करथिले मेवेन आउ जावा तापे कोन करबा ना जावा रो होम वेरिएबल टाको आमे सेटअप करिया कोठी मशीन रे राइट त आमे कोन करबा यूज करबा तो मु कोन करबी एठी मेसेशंस करछि टाइप क्लोज ओके मु बर्तन उबुंटू मशीन गोटे नै जाछि लास्ट क्लास रे हमें देखिथिले गण अमेज़न लिनक्स ता बहुत स्लो होतला अमेज़न लिनक्स ता बट उबुंटू मशीन्स बर्तन फास्ट होछि राइट जेतु अमेज़न लिनक्स ता जानि कोन पई इते स्लो होतला दैट सर्वर बट दिस उबुंटू सर्वर इज कंपैटिबली फास्टर देन दैट सर्वर नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली तो हमें कोन करबा उबुंटू रे विल इंस्टॉल okay already we have installed java and maven right तो हमें कोन करियो किछि Java एटी कोन कोची एरर कोची कोन Java home environment variable is not defined correctly तो Java रो home variable ता हमें एटा डिफाइंड हेनी करेक्टली तो हम कोन करियो सेटअप करिया पड़े Java home environment तो हमें एटी कोन करिवा आइदर मु हमें तोले टूल सेक्शंस यूज करिया मु तो पाइपलाइन स्क्रिप्ट केमती Java जो जेडीके हमें सेटअप करछ यूज करिके केमती बिल्ड करि परिबा वर्तमान मु तुमको देखे दोछि एटी एनवायरनमेंट वेरिएबल तमे सेटअप केमती करिके बिल्ड करिवा ओके तो ता पई कोन करिया पड़े Java रो होम डायरेक्टली तुमको गोटे कमांड्स तुमको दे देबी जोटी तमे यूज करि परिबो ओके सो इंस्टॉलेशंस ऑफ Jenkins and other ऑलरेडी एठी अछि बट एटा सब आउटडेटेड बहुत पुराना हे गलानी तटा दरकार नै बट मु खाली सेटअप्स टा केमती कर अछि मेवेन सेटअप्स टा ओके तो एई जो पर्टिकुलर डिटेल्स टा जावा होम जावा पाथ मते कोन करे अछि बट सेटअप करे अछि कोठी etc प्रोफाइल डी रे बट सेटअप करे अछि राइट लेट्स ओपन दैट वन तो मते कोन करे जिवो cd etc profile.d हला गोटे डेमन ए जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन से profile.d बा यूजर profile.d हला गोटे डेमन डायरेक्टली जहां भी सेटा में रखिबा एग्जीक्यूट करिबा से पर्टिकुलर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो तो मैं एठी जदी रखुची एही पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अछि जेतबळे हमर कोन लाइनक्स मशीन जेतबळे ओपन होउची बा मैं लॉगिन करूचे सेतबळे कोन होची ना पर्टिकुलर प्रोफाइल etc profile.d बा जेतबळे सर्वर स्टार्ट होउची एटा पर्टिकुलर रन होउची जहां भी आदरे अछि प्रोग्राम सब सेल स्क्रिप्ट ए सब कोन सेल स्क्रिप्ट अछि आ भितरे तो एठी हमें कोन करियो ना गोटे छोटो सेल स्क्रिप्ट गोटे बनेबा vi suppose tool environment
tool environment dot sh गोटे जस्ट गोटे नाम दे देली tool environment dot sh तो एठी मु कोन करिवि गोटे शेल स्क्रिप्ट लिखिबि bin bash ओके तो मते कोन करे अछि ना ए जो कमांड सब हमें राइट आको हमें उप्स कोन हला पीडीएफ फाइल टा रेस्पोंड करूनी ओके I will not wait for this PDF file. Let's open this document file. Maybe किछि hang ହେଇଗଲା PDF ଟା. Okay, fine. So we'll go this. Close ହେଇଯିବ automatic. तो ଆମେ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ m2 home বা maven ର home directory set କରିବା ତା ସହିତ java ର ବି home directory ଆମେ set କରିବା ମୁଁ just ପୁରୁଣା ଅଛି 1.8 but java ଆମର କଣ version install ହେଇଛି ଏଠି ଆମର java ଆମେ 7 install करछे राइट तो एटा मते टिके मॉडिफाई करियर अछि तो ମୁଁ बते देबी एटा कोन मु लिखिली तो ମୁଁ बते देली ओ सॉरी जेहेतु मु कोन नॉर्मल यूजर एक ओपन कर देछि माउ सेव करबन ताको मते सुपर यूजर रे करिया पड़ियो vi tool env.sh ओके सेट कर देली तो वर्तमान मते कोन करे अछि java underscore home रे मते कोन करे अछि java रो एग्जैक्ट पाथ टा दबार अछि ओके तो मु कोन करिवि वर्तमान ताको सेव कर दोछि तो java रो पाथ रा हमें खोजिबा राइट तो cd यूजर लिव jvm को गले एठी हमें कोन 17 जावा 17 हमें यूज करछे मु जदी जावा हाइफेन वर्जन यूज करबी तो कोन हमें यूज करछे जावा 17.0.14 इटा हला हमर वर्जन जावा रो वर्जन सेटा 1.8 जावा 8 हमर पुराना थिला राइट तो मु कोन करछि एठी हमर जेडीके फाइल इंस्टॉल होइछे ई फोल्डर भीतर तो मु एटा नि जाउछि राइट ओपन जेडीके नेक्स्ट तो मु कोन करि से फाइल ओपन करिकरी सीडी बैक गली तो vi तो एठी मु कोन करछि इंस्टेड ऑफ जावा 8 कोन कली जावा 17 path दे देली तो हमर जावा अंडरस्कोर होम को मु एक्सपोर्ट कले ओके लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु कोन करली गोटे स्क्रिप्ट लिखिली कोन ता नादली tool env.sh गोटे सेल स्क्रिप्ट लिखिली तो एटा हमर कोन देछि bin bash जोटा कि हमर इंटरप्रेटर हम यूज कले bash इंटरप्रेटर ता भीतर मु एक्सपोर्ट कमांड यूज कली एक्सपोर्ट करी करी m2 underscore home environment variable गोटे क्रिएट कली से वेरिएबल रे m2 underscore home हला in home directory of maven home directory of maven so maven रो home directory कोडा opt maven हम इंस्टॉल करथिले लास्ट क्लास रे त path एटा हला जोटा कि लिनक्स एनवायरनमेंट रे जो कंप्लीट पाथ डिटेल सबसे थी कंप्लीट टूल्स पाथ सब सेट कराइता है राइट तो पाथ रे मु कोन कली ए पर्टिकुलर ऐड कर देली /bin सेमथि मु आ गोटे जावा अंडरस्कोर होम एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं गली जावा अंडरस्कोर होम एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं गली ता से तुम कोन कली वर्तमान सेही एनवायरनमेंट वेरिएबल टा असाइन कर देली वैल्यू टा असाइन कर देली कोटी जावा होम को अछि तो एटी मु कोन कली जावा होम सेट कर देली पाथ रे राइट तो मु आपको वर्तमान सेव कर दोछि सेव कर देली गोटे कोन सेल स्क्रिप्ट मु क्रिएट कली तो वर्तमान हमें जदी ओके कैन एनीबॉडी टेल how to check the environment variable details in Linux कौन कमांड अछि environment variable कौन environment variable अछि मु तो चेक करिया पे चाहू छी कौन कमांड मु यूज करिवि env so yes subhasri env env perfect so we have to use env तो env यूज कले हमर जहां भी सब कोन यूज होछि जहां भी सब हमर कोन environment variable remember environment variables are set up in uppercase सब जगह uppercase एति पई तो मु सेल स्क्रिप्ट रे uppercase देली जोटे के environment variable ओके तो ये environment variable भितरे मते गोटे पर्टिकुलर environment variable देखे रछि तो मु केमति यूज करबी echo substitutions यूज करबी path हला गोटे environment variable
तो मुझे इंटर मारी तो वर्तमान यही पर्टिकुलर पाथ सब सेट कराई ए पर्टिकुलर पाथ सेट कराई कोडी ए पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल तो वर्तमान आमे जो स्क्रिप्ट लिखिले टूल्स स्क्रिप्ट लिखले स्क्रिप्ट रे कोन करछे जो पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल अछि ता दे आमे कोन करछे बाकी दुईटा को ऐड करछे काकू जावा आउ मेवेन पाथ आउ जावा पाथ को ऐड करूछे राइट तो ऐड वर्तमान हेनी वर्तमान कोन नॉर्मल अछि ऐड करिया गले मते कोन सेल स्क्रिप्ट को रन करिया पड़िबो राइट तो टू एग्जीक्यूट दिस सेल स्क्रिप्ट व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट आई हैव टू चेंज द परमिशंस राइट तुम यूजर को खाली देली ऑपरेशंस नॉट परमिटेड परफेक्ट तुम कोन कहली sudo then चेंज कर देली बा मु कोन करछि ना सब जगह परमिशंस दे दोछि 755 समस्त परमिशंस दे दोछि ए टेंशन लेनी राइट हम कोन कहली chmod परफेक्ट ऑप्टल मोड में यूज कली सब दे देली परमिशंस परफेक्ट तापर कोन होला बर्तन परमिशन मते एग्जीक्यूट करे अछि जेतु जते पण तुम एग्जीक्यूट न करथिबी बर्तन पाथ अपडेट हबनी राइट ए पाथ रे हमर जावा आउ मेवेन रो डिटेल्स नाइन जोटी कि जेनकिंस पाउनी से फेल होची त मु बर्तन ए सेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर दोछि मुझे तो एग्जीक्यूट करिवि तो एटी नॉर्मली मु कोन करथांती ना नॉर्मली सेमती भी जदी मैनुअली कमांड एग्जीक्यूट करथांती देन भी एटी ऐड हेई तांता बट द प्रॉब्लम वुड बी लाइक आमे मैनुअली थरे कर दबा नेक्स्ट टाइम तो सर्वर रिस्टार्ट हबो बा आमे एग्जिट करी पुन तो लॉगिन करबा जोटा आमे मैनुअली करथो सेटा डिस्प्ले करिवनी राइट तो सेति पे मु कोन कली ना सेल स्क्रिप्ट गोटे कर देकरी प्रोफाइल डी जोटा कि हमर रन टाइम रे एग्जीक्यूटिव तापर मु रखि देली तो हमर जते बळे हम लॉगिन करबा बा सर्वर स्टार्ट हो सेठी ऑटोमेटिकली प्रोफाइल डी रो से सेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हे जु आ सब जगह ऐड कर दो तो बर्तमान मु एग्जीक्यूट कर देली तो एबे जदी मु पाथ मारिबी इट शुड डिस्प्ले बट नॉट डिस्प्ले leave it echo dollar path okay mate kon kare achi let me come out from this exit कर देली तो बर्तमान फोन तर लॉगिन करूची ओके तो मते एबे echo dollar java underscore home ओके बर्तमान देखो java underscore home देखेला कोन मु कोन कली जतबे क्लोज कर देली पुन तो लॉगिन कली से स्क्रिप्ट ता जोटा प्रोफाइल डॉट भीतर अछि एटा एग्जीक्यूट हे गेला पर जावा होम रो हमर सेट हे गेला कोन ए पाथ ता जावा होम रे हमर पाथ सेट हे गेला परफेक्ट नाउ मु जदी एबे echo डॉलर पाथ मारिबी देखो एटी हमर डॉलर पाथ रे जावा आ मेवेन सब ऐड हे गेला बुझि पल्लो राइट तो लेट्स स्टार्ट द जॉब बर्तन आमे स्टार्ट करबा जॉब को चेक करबा ए सब एरर तुमको कोन सेति पई गोटे डेवऑप्स इंजीनियर यू शुड हैव द ट्रबल शूटिंग स्किल जदी तुम पाखरे नथिबो देन इट विल बी very difficult then it will be very difficult you should have the troubleshooting skill otherwise you might face some difficulties okay fine एबे कोन करबा आउथरे स्टार्ट करबा जॉब स्टार्ट करबा तो एबे टू तमरो प्रैक्टिस स्टार्ट हे गेला गाइस ओके तुमको प्रैक्टिस रेगुलर करिया पड़ी अदरवाइज जेनकिंस रे तमे ठीक से जानी पर जब भाबनी जे बहुत छोटो दिन सेटा मु जानी देबी अल्प कोडिंग करियर अछि इट्स नॉट अबाउट द कोडिंग इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटायर प्रोसेस एंड डूइंग द कंप्लीट सेटअप्स हम यदि किछि बुझी पारिबन तो जानी ही पारिबन कोठी कोन करियर अछि राइट ओके तो मु एबे बिल्ड कलिया उथरे लेट्स सी एबे रन होची ना फेल होची कोन तरह फेल हे गेला लेट्स गो देयर okay environment variable needed to invoke tolerant build failure as failure archiving artifacts again same error asla kono the java home environment variable is not defined correctly okay combine up to my win
Java home environment variable is not defined correctly. This environment variable is needed to run this program. Okay. Let's go to the tools section. Tools section रे देखिबा हमें JDK तो install करिथिले but local Java user leave JVM एटा नोन कौन पाए ठीक है किसी मतलब नहीं आसे तो but let's go there. Immediately fail होची माने किछि तो गोटे problem आसीचे. Okay. जेहेतु ମୁଁ ଏଟା bin ଦେଇ ଦେଇଥିଲି right ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ସେଠି problem ଆସୁଥିଲା କଣ କାମ କରୁନଥିଲା ତ ମୁଁ କଣ କଲି guys ତ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ bin ଦେଇଥିଲି ସେଠି right manage Jenkins tools section ରେ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ଏଠି JDK रे हमरो JDK जो installations करथिले local JDK एटी मु bin देई देथिली /bin तो से कोन करछि ना java home जेतबे तमे डिक्लेयर करछो सेठी तमे आउ /bin दबनी से ऑटोमेटिकली एटा को नबो तापर से bin ऐड करी bin भितरे कोन अछि java प्रोग्राम अछि bin भितरे कोन अछि java प्रोग्राम सेही java प्रोग्राम को से एग्जीक्यूट करूछि राइट तमे जिबाबे प्रोग्राम को जिबा डैशबोर्ड प्रोग्राम तो हमर वर्तमान देखो सक्सेस हे गला राइट तो एबे कोन करिबा जेतो फर्स्ट टाइम रन होबो से कोन करते हमें कंप्लीट देखो केते बड़ लॉग से जनरेट करिछि केते बड़ लॉग फाइल देखलो कंप्लीट लॉग फाइल एते सारा लॉग ता माने कोन हला ना फर्स्ट टाइम जेतो हमें एताकू रन करले से कोन गला कनेक्ट करला सब सर्वर को जो pom.xml जो डिपेंडेंसीज बा टूल सेट कराइ छै xml फाइल रे से सब कोन गला तार डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करिवो राइट एटी देखो सब जाका डाउनलोडिंग जहाँ भी अच्छी टूल्स डिपेंडेंसीज रे सब पम फाइल प्लगइन सब जाक डाउनलोड करी ता सहित जहाँ भी डिपेंडेंसीज दरकार ताको कौन करियो बिल्ड करियो तापर एप्लीकेशन को से बिल्ड करियो एप्लीकेशंस को एटी देखियो बिल्ड सरला परे लास्ट को तमे देखियो एटी कोन अछि पैकेजिंग वेब ऐप कोन कला से गोटे वेब ऐप पैकेज कला कॉपिंग वेब ऐप रिसोर्स तो एटी टारगेट रे डेवऑप्स वेब गोटे पैकेज क्रिएट कला तापर कोन करछि ना बिल्डिंग वार फाइल त हमर वार फाइल जनरेट हैला कोन डेवऑप्स वेब ओके बिल्ड इज सक्सेस सी बिल्ड इज सक्सेस तापर आर्काइविंग आर्टिफैक्ट त बर्तन बिल्ड सक्सेस सरिला परे तो ए बिल्ड ता जोटा कोन डेवलपर माने करथांते नाउ दिस बिल्ड इज बीइंग डन बाय द जेनकिंस इटसेल्फ ओके तो जेनकिंस को आको जेनकिंस कोन कला बिल्ड कला राइट तो जेनकिंस बिल्ड हैला पर हमें कोन करिवा now after that it does the archiving artifacts post build this is post build right तो हमें कोन करिया एप्लीकेशन को वर्तमान जिबा प्रोजेक्ट को देखो वर्तमान प्रोजेक्ट रे कोन आर्टिफैक्ट्स एटी स्टोर हेकी अछि devops.web.war तमे चाहू छै वेब एटा को डाउनलोड करिया पे तमे एठी भी डाउनलोड करि पारिबो बट हमें जदि आकु बैकएंड रे देखिबा त हमें कोन जावा रो होम डायरेक्टरी को जिबा cd यूजर कोन leave Jenkins JVM no bin sorry user bin Jenkins user sorry user leave Jenkins नहीं ओके तो हमें पाइजो लॉग से पाइजो कौन थिला सेटा लॉग रे कौन थिला वर्कस्पेस रे user leave Jenkins sorry var leave not sorry it's not user तो ये पर्टिकुलर वर्कस्पेस को हमें जीवा राइट वर्कस्पेस रे हमें cd var leave Jenkins workspace ए वर्कस्पेस रे कोन कर जो प्रोजेक्ट ना रे जावा आप बिल्ड आप ए प्रोजेक्ट ना रे छोटे वर्कस्पेस क्रिएट करिछि राइट से वर्कस्पेस रे वर्तमान कोन करबो ना पर्टिकुलर से वर्कस्पेस रे भी कोन करियो से फाइल टाको से आर्काइव करतो बा जनरेट करतियो बिल्ड करतियो राइट तबे मु जीबी से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भीतर को राइट डन तो एठी देखो कंप्लीट जहां भी थिला सब डाउनलोड कर देछि बिल्ड सइला परे गोटे टारगेट फोल्डर क्रिएट करछि मु सीडी टारगेट फोल्डर को जी
एठी हमरो complete devops web.var file devops webs.var ओके ए devops web.var फाइल टा कोन जनरेट हिच एई devops war को आमे कोन करिया बर्तमान डिलीवर कर राइट तो आमे पोस्ट बिल्ड सेक्शन में कोन करथिले आर्काइव करितले এই जो पैकेज टाको आर्काइव करजे बट आमे देखिबा केमती ताको आमे टॉमकैट सर्वर को बा टेस्टिंग एनवायरनमेंट को बा हमर बाइनरी रिपोजिटरी को केमती डिलीवर करिबा ओके सेटा आमे सब जगह पाइपलाइन स्क्रिप्ट पढिबा नेक्स्ट क्लास रे टेंशन तो इटा हला कोन हमर कंप्लीट प्रोजेक्ट आमे देखले केमती बिल्ड होची राइट ओनली कंटीन्यूअस इंटीग्रेशंस पार्ट आमे देखिचे बाकी बहुत सारा पार्ट्स होची आमे पाइपलाइन जेतले पढिबा ऑटोमेशन जेतले सिखिबा पाइपलाइन स्क्रिप्ट जेमते लिखिबा सेतरे यूनिट टेस्ट करिबा कोड स्कैनिंग करिबा बिल्ड करिबा डिलीवर करिबा सब जगह सेतरे करिबा तो अबे मु तुमको बतै देली केमती फ्री स्टाइल रे आमे कोड एप्लीकेशन बिल्ड करिबा